Okay, so I'm sorry. ठीक है, I'm ready now. Okay, so we are in the last part of this vibrational uh, motion, treatment of vibrational motion, quantum mechanical treatment of the vibrational motion. That's what we were trying to understand. And so you have already learnt about this profiles of the wave function, symmetric, anti-symmetric. Okay, so sorry. So ये आपने देखा लास्ट क्लास में, पहले भी देखा है. So symmetry of the wave functions is important. So every alternate wave function that you find for v is equal to 0, v is equal to 1 is symmetric, anti-symmetric, and so on. Then you also noted that we have, the spread of each of the wave function is different. Okay. When I say the spread of the wave function is different, that means that you can see that where it goes to 0, that point is different in all cases. So then you also noted in this case that as you go to higher quantum number, initially you had the maximum amplitude over here, maximum at the center at 0 point equilibrium position, but sorry. Yeah. So maximum is here. Now the maximum amplitude points gets shifted. So amplitude maximum, so gradually you are moving to, so maximum amplitude is now gradually shifting to outer periphery, away from the equilibrium position. And if you calculate it for a very large value of quantum number, v is equal to 20 or 25, then you will find that it is a huge difference. यहाँ वाला छोटा होता जाएगा, अंदर वाला और छोटा होता जाएगा, और बाहर वाला बड़ा हो जाएगा, जो लूप आप ड्रॉ करेंगे. ठीक है. So that's how it the whole thing is, as of now, what we understand. Okay. Now before, so in case of, and you also know that now this model of harmonic oscillator, we started with understanding HCl molecule. Taking HCl molecule as an example, we tried to understand the various aspects of harmonic oscillator, and that is also an application of, you can say that, harmonic oscillator as applied to understanding the vibration in molecules, real molecules. So HCl represents quite closely to the harmonic oscillator without getting into complication of reduced mass. You can very well calculate all the properties, and that's why so last class we also learned how to calculate mean displacement, and mean square displacement is an assignment that I told you to do in a similar fashion. Then mean kinetic energy, mean mean potential energy. So all these things we can calculate. Now the important thing that I was trying to tell you here, that it is also related to what you were trying to understand in first semester regarding internal energy. Internal energy, I told you, for any gas, like any molecule, will, if it is a monoatomic gas, then it will have only translational kinetic energy. If it is a molecule like HCl, it will have translational, rotational, as well as vibrational. Okay. So how many, this number of vibrational motion, that modes, different ways of vibration goes on increasing as the molecule increases, number of, and how do we decide about that?
And so that is like suppose you have one atom. Suppose I have an atom A and atom B. Individually they are अलग अलग हैं, ठीक है. So this will have 3 degrees of freedom. We call it degrees of freedom. The kinetic energy, when you think of kinetic energy, this is x, y and z. For this also you have x and z. So x y z इसका भी होगा. So तीन, इसको हम कहते हैं कि इसके पास 3 degrees of freedom है. Each of these atoms A and B has 3 degrees of freedom. That is, kinetic energy is equally divided into 3, the motion along x, along y, along z. ठीक है. And each of them is divided equally, half kt, half kt. This is what we learned earlier in first semester. Okay. So see, now when they combine to give you a molecule, so now this was an important point that I wanted to tell you. Now suppose the two atoms come closer to each other and a bond is formed, a molecule is formed. Now this was starting from an atom. Now we have a molecule. So now what will happen? So it was having 3 degrees of freedom, only translational 3 degrees of freedom. This was true for both of them. Translational initially for the individual molecule that we had. ये इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ, बी के लिए और ए के लिए, दोनों के लिए 3-3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम थे. ट्रांसलेशनल 3 degrees of freedom. Translational kinetic energy, and each you can divide it equally in the x, y, z, half kt, like that. 3 degrees of freedom. Now when they combine to give you one molecule, ट्रांसलेशनल मोशन के लिए तो वही एक्स वाई जेड 3. अब थिंग इज दैट, सो टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हियर, एक मिनट इस एरो को हम कंबाइन करें थोड़ा सा. When they combine together, degrees of freedom of freedom conserved. तो टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इज 6. सो टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो हम कह रहे हैं ये यहाँ पे 6 है. तो ए बी जब कंबाइन करेगा तब भी उसके पास 6 टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होने. तो काइनेटिक एनर्जी विल बी, दैट इज टू से दैट द काइनेटिक एनर्जी इज हैविंग 6 different ways. It is distributed in 6 different ways. ये जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है इसको आप इस तरह के नंबर ऑफ वेज इन विच द एनर्जी इज गेटिंग डिस्ट्रीब्यूटेड. तो एक्स वाई पहले था कि एक एटम है एक्स वाई जेड, ओनली काइनेटिक एनर्जी का एक ही फॉर्म है, मतलब ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, एंड दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन एक्स वाई जेड डायरेक्शंस. नाउ व्हेन द मॉलिक्यूल इज हियर, so again it will have some kinetic energy, and the kinetic energy is going to be distributed in 6 different ways. The degrees of freedom is to be conserved.
So you have 3 degrees of translational kinetic energy x y z, उतना ही coordinates चाहिए x y and z. So this is 3 degrees of, so this molecule will have 3 degrees of translational, 3 degrees of freedom for translational motion, 3 degrees of freedom for translational. कहाँ गया, जस्ट मिनट, कहाँ गया, मैं लिख रहा था. हाँ, मैं कह रहा था ये ट्रांसलेशनल डिग्रीज इसमें तो इसकी 3 ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, बाकी की 6 काइनेटिक एनर्जी मतलब डिस्ट्रीब्यूट होना है. So rotational, if you look for rotational energy, rotational, there will be rotation in the molecule that will also contribute. So rotational, you will have a molecule, diatomic molecule. It can rotate like this, one along this axis तो समझ रहे, या फिर ऐसे रोटेट हो सकता है इन द प्लेन ऑफ द बोर्ड और आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द बोर्ड, दो. और तीसरा जो आप अगर सोचते हैं ये वाला, दिस इज नॉट अ रोटेशनल मोशन बिकॉज द एटम्स आर इन देयर पोजीशन, दे आर नॉट मूविंग. जब ऐसे रोटेट हो रहा है तो देयर इज चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ द एटम्स, सो दिस इज अ रियल रोटेशनल मोशन. But if you are looking at it this way, this was not considered. So this is, so only 2 rotational modes of motion, rotational motion is possible in a diatomic molecule. ठीक है. So if the molecule is in the plane of the board, then it can either rotate like this in the plane of the board or out of the plane of the board. Molecule बाहर निकल रहा है. ठीक है. So there are 2 rotational degrees of freedom. So 2 degrees of freedom for rotational motion, for rotational motion, 3 degrees of freedom for this thing, and the one that is left out is for vibrational, one vibrational, and 1 degrees of freedom for vibrational motion. So that is the stretching vibration that we were considering. ठीक है. So 3 आपने पूरा हिसाब कर लिया, 3 + 3 6, 3 + 2 + 5 + 1. अब ये जो चीज होगी, so this number of I can go to the next one. So now think of a non-linear, this was a diatomic molecule, and the same is going to be true for all linear molecules, that you will have अच्छा वो बाद में आएंगे. We will come to the general concept बाद, पहले diatomic से triatomic पे जाते हैं, and then we will generalize it for the whole set of things. So you got 6, you accounted for 6, and now
you can have if suppose you have A, B and C combining together. Now think of A, B, C, तीन ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल, नॉन लीनियर, लीनियर नॉन लीनियर दोनों पॉसिबिलिटी हो जाएगी. सो सपोज अभी हम एक लीनियर करके देखते हैं. ए बी सी लीनियर. ए बी सी कैन कंबाइन टू गिव आइदर लीनियर मॉलिक्यूल और नॉन लीनियर. So how many vibrational degrees of freedom this molecule will have? Go step by step. जैसे अभी हमने इसको किया वैसे आप करें. तो इस मॉलिक्यूल के लिए भी तीन ट्रांसलेशन मोशन के लिए पूरा मॉलिक्यूल जहां भी मूव करेगा उसका सेंटर ऑफ मास इकट्ठा ही मूव करेगा. तीन ही कोऑर्डिनेट चाहिए आपको, एक्स वाई जेड. ठीक है. सो ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के लिए वही तीन. थोड़ा सा x y z. So 3 degrees translational, 3 degrees of freedom initially, and how many rotations? Again the molecule is linear. Any linear molecule will have the same situation as in case of diatomic molecule. So only 2 degrees of freedom for rotational motion. Two degrees of freedom, and so 3 plus 2. What? How many degrees of freedom you had initially? 3 degrees of freedom. 3, 3, 3, 9 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. 3, 3, 3 टोटल 9 थे आपके पास. So the final molecule will also should have 9 degrees of freedom total. The, or you can say, in other words, you can say that the kinetic energy is going to be distributed in 9 different ways. ठीक है. काइनेटिक एनर्जी का 3 हो गया, रोटेशनल का 2 हो गया, बाकी का सारा वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. ऑल अदर्स आर गोइंग टू बी, सो 3 plus 2 और जो बच गया, सो 9 minus 5, 9 minus 5 vibrational degrees of freedom. 4. So you are expecting 4 degrees of freedom for the vibrational motion. There will be 4 degrees of freedom. So 4 different ways. That means that this molecule can vibrate in 4 different ways. जिसमें कि अब स्पेक्ट्रोस्कोपी में जाएंगे तो और डिटेल, बट ब्रीफली आपको बता दूं कि एक तो हो गया कि स्ट्रेचिंग होगा. ए बी, ए और सी इकट्ठा एक साथ मूव करें, इक्वल डिस्टेंस, इक्वल कंप्रेशन, इक्वल दोनों साइड. दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग. दूसरा हो गया कंसिडरेशन. आप इमेजिन कीजिए कि ए अगर स्ट्रेच हो रहा है तो दूसरा वाला कंप्रेस हो रहा है. एक बॉन्ड स्ट्रेच हो रहा है, दूसरा कंप्रेस. ये एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, दूसरा मोड ऑफ वाइब्रेशन. तीसरा बेंडिंग. अब ये मॉलिक्यूल ऐसा है, ऐसे करेगा. So it can bend in the plane of the board or out of the plane of the board. So that bending mode is degenerate. And so 4 different तरीके से आपको बता दिए how the vibration can take place in this molecule. So all the 4, so there are 4 vibrational modes, out of which 2 happen to be, one mode is degenerate, मतलब उसमें 2 अलग अलग डायरेक्शन में हो सकता है. ठीक है. ऐसा केस होता है CO2 मॉलिक्यूल के साथ. कार्बन डाइऑक्साइड को इमेजिन करें, उसमें इस तरह से होता है. सो डीजेनरेट मोड के लिए मतलब एनर्जी एक ही है,
लेकिन दो डिफरेंट वेज में 3 डायमेंशनल स्पेस में अलग अलग प्लेन में वो हो रहा है, ठीक है। सो इस तरह से 3 + 2 4 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आपको यहाँ पे। सो दिस इज वेरी हेल्पफुल, यू विल फाइंड इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इफ यू नेट गेट में, ये सब ये आपको विजुअलाइजेशन पूरा रहेगा ना। सो मैं वही कहता हूँ, कभी भी पढ़ना हो डायरेक्ट फार्मूला पे मत जाओ, इसका फार्मूला लोग रट लेते हैं, समझते हैं ना। अब देखिए फार्मूला आ ही गया, आप देखिए। सो एनी लीनियर मॉलिक्यूल यू कैन जनरलाइज इट इफ द नंबर ऑफ एटम्स कंबाइनिंग इज n, तो 3n is the total degrees of freedom, and if the molecule is linear only 2 rotational modes will be, so 3n minus minus 3 plus 2 5. So number of vibrational modes possible is 3n minus 5 for any rotational. ये आप बिना समझे पहले फॉर्मूला रट लेते हैं, उसके बाद उसको बस किसी तरह से निकाल देते हैं। एक्चुअल में इस तरह से आपको समझना चाहिए, एटम्स से कंबाइन करते हुए उसको कंजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड फाइनली वी आर काउंटिंग फॉर ऑल द थिंग्स। सो इन जनरल any, so when you generalize it, so total you had, so total, so if so number of combining atoms n degrees of freedom, total degrees of freedom, three n, right? If the molecule is linear, then number of degrees, rotational degrees of freedom is 2, ठीक है। ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, वो तो हमेशा 3 ही रहेगा, ट्रांसलेशनल वाला तो 3 ही रहेगा, तो पहले ही बताया था। सो नंबर ऑफ वाइब्रेशनल, मतलब और तीसरा एक ही बच गया है मोशन, और सारा उसी में एडजस्ट हो जाना है। वाइब्रेशनल में जाके सारे जो मोड्स है ना कंजर्व करने के लिए, सब जो एडजस्ट करते हैं वहां पे जाके सारी एडजस्टमेंट हो जाती है, ठीक है। सो नंबर ऑफ वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, इस बार आप लोग नेट का एग्जाम दोगे ना? अभी जून वाला अभी नहीं निकला है ना, अभी आएगा। (3n minus 3 minus 2) है ना। ट्रांस ठीक है। सो ट्रांसलेशनल 3n minus 3 ट्रांसलेशनल 3 जो बच गया वो आपका -2 3n minus 2 -3 -2 -5 3n minus 5। तो वो 5 जो लिखा लोग रट लेते, वो 5 क्यों आ रहा है, 3n minus 5 क्यों आ रहा है, वो किसी को पता नहीं होता है, रट के करेक्ट आंसर भी लोग पहुंच जाते हैं। तो वही कई बार आप बिना समझे, and if you are doing even number of mistakes, sometimes you can reach the correct answer, but the fact is that you have gone wrong, आपने गलती की है उसमें, और वो कहीं ना कहीं फिर आपको प्रॉब्लम करेगा आगे चलकर।
चाहे आप इंटरव्यू फेस करें या कब करें, MCQ तो निकल जाएगा लेकिन उसमें फंस जाएगा। तो इस तरह से क्लियर आप इसको समझिए, हाउ यू आर गेटिंग 3n-5। ठीक है, अब ये हमने लीनियर लिया तब हुआ। अब इसमें अगर इफ आई में गो बैक, हो गया, आपने लिख लिया अपनी कॉपी में, फेयर अच्छे से लिखते जाओ कि आपको समझ में आ जाए। नाउ सपोज इफ द मॉलिक्यूल कंबाइंस एंड यू हैव we make it just then in this case what will happen, 3 translational 3 rotational, now the third, so x y z जो तीनों एक्सिस के अलॉन्ग रोटेशन होगा, तीन अगर ऐसा मॉलिक्यूल होगा बेंट टाइप का, तो इसका दोनों आप कंसिडर करेंगे। सो इट विल हैव, दिस मॉलिक्यूल विल हैव 3 translational 3 rotation degrees of freedom, so number of freedom will be 3, here it is 3 3 3, so 9 minus 6, 9 minus 6 3, so 3 vibrational modes, so 3 different ways in which it can vibrate. So this is the case for water molecule, वाटर मॉलिक्यूल में ऐसा ही होता है। और एक हो गया सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, दोनों ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एक साथ, जो पिक्चर आपको दिखाया था फर्स्ट वाले स्लाइड में जब उस दिन हमने दिखाया था। तो इस तरह से अब इसी को हम जनरलाइज कर देते हैं कि नॉन, इफ इट इज नॉन लीनियर मॉलिक्यूल, कंबाइनिंग एटम, नंबर ऑफ कंबाइनिंग n 3n, टोटल नंबर ऑफ फ्रीडम 3n हो गया, 3n minus 6, 3 plus 3, so that's how you go. Okay, so number of combining atom n, total degrees of freedom is 3n. If the molecule is non-linear, here we are talking about non-linear, rotational degrees of freedom would be 3, ठीक है, and so this one is getting changed here, minus 3 for rotation, and so 3 minus 3 6, 3n minus 6 हो गया ना, सिंपल है। सो जो नंबर ऑफ वेज पहले डिस्ट्रीब्यूटेड था एनर्जी, मतलब आप सोचिए कि एनर्जी का जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है 3 एटम पे 3 अलग में, तो टोटल उसको भी हमें कंजर्व करना है। नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ मोड्स, नंबर जितने तरीके से वो डिस्ट्रीब्यूटेड है वो सारा कंजर्व करते हुए तभी मॉलिक्यूल बनता है। दैट्स वन। सो व्हेनेवर वी आर connecting with a vibration, this is one aspect which I thought that it will be better if I tell you now, कि बाद में फिर मैं कब भूल जाऊंगा पता नहीं ये, लेकिन ये important है आपके लिए, आपको you will find it very helpful in solving. Now the thing that we want to discuss is the tunneling, and I think okay, sorry, not this one, skip. Just a moment, I think I put it here. So we have calculated these are things that we are already done, calculating the properties, and I told you that yeah, you will need to calculate the mean square displacement, and once you have calculated mean square displacement, you can also calculate mean potential energy. So that was half EV total energy, mean kinetic energy is also half EV. And then we are here tunneling
the concept of tunneling, as I told you, we had also seen. That's why I need to go back to that particle in a one-dimensional box